गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं एयरफोर्स फेज 2 के स्टूडेंट्स के लिए जो एयरफोर्स जीडी की तैयारी कर रहे हैं। उन स्टूडेंट के लिए सीसीटीवी कैमरा, दिस इज द टॉपिक हैज बीन आस्क्ड इन द लास्ट प्रीवियस ईयर्स आल्सो। और ये अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सीसीटीवी कैमरा कि सीसीटीवी कैमरा जो है उसका क्या यूज है डे टू डे लाइफ में, and what is the importance and how this technology has replaced the human beings also। और कितने लोगों की इसने जो ब्लेस किया है, किस तरीके से लोगों की सिक्योरिटीज इसने प्रोवाइड करवाई है, उसके साथ में various kinds of security has been given by the CCTV cameras also। and in the various sectors we are using the CCTV cameras like with education industries, different kind of sectors also, industries also, there are government sectors also, they are using the CCTV cameras in the highways also, road transportation safety also, in the hospitals also. This generally provide different kind of safety to the peoples. So there are lot of advantages and disadvantages of the CCTV camera. So we will discuss some points about the CCTV camera. The first one, we are talking about the introduction of the CCTV camera. What is a CCTV camera? So CCTV stands for the closed circuit television. So this stands for the in the circuit that is transmitting information in a this is a device capturing the information and transmit in a video format also. So it is a system used to monitor and record activities also. Multiple activities को record भी करता है. CCTV is mainly used for the security and surveillance purpose also. Likewise, as this is the name given by the camera key, this is used for the security and surveillance purposes also। and if you are talking about the CCTV camera, है क्या ये? A CCTV camera is a device that captures video footages also, जो video footage को capture करता है। The footage is transmitted to specific set of monitors also। Likewise, this is the devices we have to connect with the monitor also। It work within a closed network also। Likewise, closed circuit के अंदर ये काम करता है। If we are talking about the purpose of the CCTV camera, it prevents the crime and theft also। Likewise, if you are talking about the CCTV camera, इसके multiple purposes में use कर सकता है। It controls the crime, है ना, because wherever the CCTV camera, the person will be recorded if they are doing any kind of activities also। So we can record the multiple activities done by the people। और ये 24 घंटे वर्क करता है, किसी भी इंटरप्शन से रुकता नहीं है, इफ दिस इज कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। Nowadays the advanced CCTV cameras also came, they are having the battery backup also। तो उसके अंदर एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की जरूरत नहीं है, तो बैटरी बैकअप के साथ भी लगे हुए हैं, सोलर कनेक्टिविटी के साथ भी लगे हुए हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस हैज बीन डन इन दिस काइंड ऑफ CCTV camera also। So due to the increase in the technology, we have the advancement of the CCTV camera to monitor activities in real time also। ये रियल टाइम के अंदर एक्टिविटीज को मॉनिटर भी करता है। लाइकवाइज वी आर हैविंग ए गार्ड टू ऑपरेट द सिस्टम ऑल्सो। तो अगर मैनुअली बात करेंगे कि गार्ड को हमको लगाना पड़ता है, बट नाउ इट इज वी कैन पुट द CCTV कैमरा, देन वी कैन लुक द लाइव एवरीथिंग ऑल्सो, वेयर एवर वी आर सिटिंग, देन वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑल्सो। तो आजकल वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ में भी CCTV कैमरा हमें मिलते हैं। इट एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पीपल एंड प्रॉपर्टी ऑल्सो। लोगों की सेफ्टी भी इंश्योर करता है, और कोई भी प्रॉपर्टी है उसके अंदर कोई इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, कुछ भी मिसलीडिंग एक्टिविटीज होती है, तो उसको भी रिकॉर्ड कर लेता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू द पीपल की इस तरीके से थेफ्ट या चोरी या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज की जाए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ CCTV कैमरा, there are multiple types of camera we are having: a dome camera, bullet camera, PTZ camera, IP camera, wireless camera। Wireless camera, that is used for the transmission of the information without any kind of wireless system। Likewise, we can get the information anywhere else also। If we are talking about the IP camera, that will be connected through the internet also। This will provide the information to particular location also, according to the IP address also। Bullet camera and dome camera, these are the varieties of the camera that we are getting in which
we are having the multiple facility that is provided. Likewise rotational camera घूमता है, डोम कैमरा चारों तरफ in every direction. तो अगर हमें किसी दूसरी डायरेक्शन की लोकेशन लेनी है, जूम आउट करना है, तो दैट काइंड ऑफ फैसिलिटीज विल गेट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कैमराज आल्सो. If you are talking about the main components of the CCTV system की अगर main components की बात करें तो we are having the DVR system also, monitor also, cable and network we must have to need it for this kind of thing, power supply and CCTV camera also. So this is the thing that these are the devices that we will use for the CCTV camera. If you are talking about the working of the CCTV camera, how it works, camera captured by the video continuously and video is sent to the DVR या जो भी डिवाइस कनेक्टेड होता है, या आजकल वायरलेस कैमरा आ गया तो डायरेक्टली वायरलेस कैमरा will be linked to the application also. Application पे directly we can fetch the video footage also. If you are talking about the footage is displayed on the monitor also. If cameras are connected to the monitor, then we can see the information on the monitor also. Data can be stored for the future purposes also. Likewise इसमें सिक्योरिटी इस तरीके से है कि वी कैन सेव द इंफॉर्मेशन, वीडियोस को हम सेव कर सकते हैं एंड दैट कैन बी यूज फॉर द फ्यूचर पर्पसेस आल्सो इफ एनी काइंड ऑफ मिसलीडिंग एक्टिविटी ऑन दैट पर्टिकुलर कैमरा हैज बीन रिकॉर्डेड. नाउ यूजेस ऑफ द सीसीटीवी कैमरा की बात करें कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ द सीसीटीवी कैमरा. तो बेसिकली जनरली वी कैन यूज एट द होम एंड अपार्टमेंट आल्सो. स्कूल और कॉलेजेस के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, ऑफिस एंड फैक्ट्रीज के अंदर यूज कर सकते हैं, बैंक्स और एटीएम के अंदर यूज कर सकते हैं, पब्लिक प्लेसेस में हम यूज कर सकते हैं, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज है वहां पे यूज कर सकते हैं, हाईवे के अंदर भी यूज कर सकते हैं. स्पीड कंट्रोल सीसीटीवी कैमराज भी आजकल दे आर डिटेक्टिंग द कैप्चरिंग द स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑल्सो. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग दैट विल बी डन बाय द सीसीटीवी कैमरा. तो this is the home and apartments. This provides the safety to the apartment also and home also. In the school and colleges, there are the different kind of activities has been done in the school and colleges. So that should be monitored by the school principal also and other kind of school management also. If you are talking about the offices and factories, because of this kind of cameras, offices and factories work has been efficiently done because people are getting information from this kind of cameras and how the work is going on and what kind of process go on in the factories also, offices also. So people are working or not, the management can observe this kind of activities also. In the banks and ATMs की अगर बात करें तो this kind of thing will provide the security also, because in the bank if we are having the camera then we can detect any kind of activities, misleading activities also. और ATM के अंदर भी कोई misleading activity होती है तो वो कैमरे के अंदर easily कैप्चर हो जाती है. और कोई भी अगर कैंडिडेट किसी भी तरीके की फॉल्स एक्टिविटीज करता है तो वी कैन कैप्चर फ्रॉम द सीसीटीवी कैमरा ऑल्सो. पब्लिक प्लेसेस में इस तरीके से होता है कि पब्लिक प्लेसेस में भीड़ भाड़ के इलाके में अगर सीसीटीवी कैमराज हैं तो कोई भी पर्सन, कोई क्रिमिनल हो या फिर कोई भी टेररिस्ट हो तो वी कैन कैप्चर इन द पब्लिक प्लेसेस ऑल्सो. लाइकवाइज एनी काइंड ऑफ फॉल्स एक्टिविटीज डन ऑन द हाईवेज ऑल्सो. तो हाईवे के ऊपर भी आजकल कैमरा लगे हुए हैं. उससे क्या कर सकते हैं, वी कैन डिटेक्ट द पर्टिकुलर कार नंबर ऑल्सो. So if we are using the artificial intelligence system, so we have given the information to the CCTV cameras also. If they are getting some kind of wrong activities, likewise किसी कार ने कोई क्राइम किया या कोई चोरी की कार है, उसका नंबर हमने अगर CCTV कैमरा में डाल रखा है तो it can be easily tracked by the CCTV camera also. Then it will be fetch and then it will transmit the information to the particular location. तो इसके लिए पुलिस वगैरह के लिए भी बड़ी सेफ्टी हो गई है. इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट यूजेज है फॉर द सीसीटीवी कैमरा ऑल्सो. यहाँ पे इजीली पर्सन के आजकल वी आर हैविंग द एडवांस टेक्नोलॉजी इन दैट द कैमरा इज कैप्चरिंग द फेस डिटेक्शन ऑल्सो. तो फेस को भी रीड कर लेता है. तो इफ वी आर गिविंग सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि कोई टेररिस्ट का फोटो या फिर किसी क्रिमिनल का फोटो, दैट वी विल गिव टू द पर्टिकुलर कैमरा, उसमें अगर डाल देते हैं तो थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिस विल गिव द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कि ये पर्सन यहाँ पे ट्रैक किया गया है.
So these are the things that will be security will be provided by the CCTV cameras also. As we have the advantages, so some of the disadvantages also have the CCTV camera. If you are talking about the advantages of the CCTV camera, as we have discussed earlier also, and it provides a 24/7 surveillance also. 24 घंटे वर्क कर सकता है ये किसी भी विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरप्शन ऑल्सो। और अगर उसकी जगह कोई ह्यूमन बीइंग को हम अगर रखते हैं तो ही कैन नॉट डू दैट मच ऑफ एफिशिएंटली ऑल्सो। कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ में कोई भी मिस लीडिंग एक्टिविटीज़ हो जाती है जिससे हम छूट जाती हैं चीज़ें, तो यहाँ पे 24 घंटे ये काम कर सकता है। इट determine the crime deterrence also कि there are lots of crime has been done in our society also, so it controls the criminal activities also. It helps in the investigation, like I was telling about you कि we can give the information through the artificial intelligence. It can detect any kind of misleading activities if it has been recorded in the CCTV camera. It improves the discipline and safety also. ये कहीं ना कहीं हमारी सेफ्टी को भी इम्प्रूव करता है और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को भी मेंटेन करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में, स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए अंदर लोगों को रिकॉर्ड कर लेता है, तो इट प्रोवाइड्स सम टाइम्स ऑफ डिसिप्लिन एंड सेफ्टी फॉर द पीपल ऑल्सो. If you are talking about the disadvantages of the CCTV camera, likewise I was telling you कि if we are having the advantages, there are disadvantages also. तो इस इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ वेरी हाई. यहाँ पे अगर हमें इंस्टॉल करना है तो डिवाइस को, तो उसकी कॉस्ट भी लगती है. इट इज़ अ प्राइवेसी कंसर्न ऑल्सो बिकॉज everywhere we are putting the CCTV camera, so there are some kind of false information has been leaked in the social media also, and people are using in the false activities also. Likewise some of the scams has been done through the CCTV camera, या फिर कुछ अनवांटेड वीडियोस जो हैं, false videos जो हैं, similarly mostly this kind of problem faced by the women also. So this is also the privacy threat of the people. उसमें spy cameras भी people generally use कर लेते हैं. So these are the disadvantages of the CCTV camera. It requires regular maintenance also. If you are talking about the maintenance of this kind of camera, it needed some kind of information. यहाँ पे डाटा जो प्राइवेसी है वो भी it can be hacked easily if this device is connected with the internet also. तो कहीं ना कहीं यह हमारी सिक्योरिटी को भी थ्रेट है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द एवरी इंफॉर्मेशन, है ना, वेयर वी आर. सो हमारी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है दैट विल ऑल्सो बी शेयर्ड. कोई घर में अगर CCTV कैमरा लगाता है तो उसकी घर की मतलब एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जा सकता है और उसको हैक भी किया जा सकता है. So this is the disadvantages of the CCTV camera. If you are talking about the importance of this camera, it enhance the security system. Generally ये security system को enhance करता है. It builds a safe environment also. ये हमको एक safe environment भी provide करवाता है. It reduces the risk of the crime. ये crime को भी reduce करता है कहीं ना कहीं. If you are talking about the conclusion, that is also the important part of the group discussion कि how we are giving the conclusion also. But where you have to give the conclusion and how you are giving the conclusion, that is the most important part. The student are focusing that the information is important. You must have the information about the particular topic, but there is a thing that you must have to focus about the preparation of the group discussion. How you are delivering your information, that is also an important part, and where you are delivering your information and how you are fetching your information from the other student also. Because everything you will not able to speak in the group discussion. There are a lot of person, they will also giving some kind of information. In that information, your information must be effective also. So there are a lot of things you have to consider. So how you are giving the conclusion, that is also an important part. If you are talking about the conclusion, CCTV camera having a lot of advantages also. CCTV cameras are essential for the modern securities. Likewise, as we have given the advantages and disadvantages also, they provide the safety of monitoring and the evidence also. CCTV helps in creating a secure society also. It means that this is a device that provides our safety and security,
and it reduces the criminal cases also, and it also tracks the misleading activities that has been done in our society. So we can overcome overall false activities in our society, and we can control lot of things through the this multi-purpose devices, and that can be used everywhere else. And this is a device that provides a live footage also and recording also. So this is very useful device as a electronically it can be used. So thank you. Jai Hind, Jai Bharat.